Sproglets کا جو اسکیڈول ہے, this is the children come here for 4 hours a day, 5 days a week. So they come here just like a normal school. They come at 10 o'clock in the morning till 2 o'clock. 10 o'clock, why did I opt for 10 o'clock? Because they are special children. Most of the children, they either take medicines because it is a problem with these autistic and the LD children that they have इनके नींद के issues बहुत होते हैं, इनकी नींद proper नहीं होती है, जिसकी वजह से most of the children they are on any type of medicine. So I want them to take a proper sleep. उसके बाद ये आराम से अपना नाश्ता करें, क्योंकि जिस चीज़ में भी बैठते हैं ये वो टाइम बहुत लगाते हैं उसमें. सो वो आराम से नाश्ता करें, पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन ना हो, मदर के ऊपर भी, दूसरे बच्चों को छोड़ के आराम से फिर ये यहाँ आते हैं, फ्रेश होते हैं. एंड यहाँ आके फिर इनकी नॉर्मल तरीके से जैसे असेंबली होती है बिल्कुल उसी तरह से असेंबली होती है. असेंबली कोई टीचर नहीं करवाती. आई मीन द टीचर्स आर देयर, ऑफ कोर्स दे आर देयर टू असिस्ट देम, बट असेंबली करते बच्चे खुद ही हैं. असेंबली के बाद इनका वर्कआउट का एक सेशन होता है. 2, 3, 4, 5 head, shoulder, knees and toes. उस वर्कआउट के सेशन के बाद फिर ये अपनी अपनी क्लासेस में जाते हैं. वहाँ इनका रूटीन काम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इनकी पूरी एजुकेशन, इंग्लिश, मैथ्स, पाक स्टडीज़, सिटीजनशिप, सारी जो चीज़ें हम इनको पढ़ाते हैं, साइंस. उसके बाद एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ तजवीद एंड नाजरा, वो हम इनको ज़रूर कराते हैं. एंड इस्लामिक एजुकेशन वो इसलिए कराते हैं कि बास पेरेंट्स हमसे ये कहते हैं कि जब बच्चा बोल नहीं पा रहा तो आप ये क्यों करा रहे हैं. आप मुझे बताएं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, इससे अच्छी स्पीच थेरेपी कोई हो ही नहीं सकती. कि हम इनको जब तजवीद करवाते हैं और जब हम इनसे मखारिज निकलवाते हैं और जब हम इनसे बुलवाते हैं, तो बिलीव मी ये इन बच्चों की स्पीच ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाती. कुछ ऑफ कोर्स कुदरत है. उसके बाद हम इनका हमारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसी तरह से एनुअल प्रोग्राम्स भी होते हैं हमारे. हर सेलिब्रेशन होता है, 14 अगस्त होगा, 23 मार्च अभी हुआ, जिसमें हम इनको पूरा ऑडियो सब कुछ हर चीज़ का दिखाते हैं. हम इनको विजुअल दिखाते हैं, पूरा ऑडियो विजुअल इनको हर चीज़ दिखाई जाती है. अब रमज़ान आने वाले हैं, उसके बारे में इनको पूरी एजुकेशन दी जाएगी. ईद की पूरी एजुकेशन इनको दी जाएगी. जब बकरीद आएगी उसकी पूरी एजुकेशन इनको दी जाएगी कि क्यों कुर्बानी होती है, क्या होता है. म्यूज़िक इनको हम करवाते हैं, क्योंकि म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थेरेपी. उसके बाद फिजियोथेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इनके पास हम लोग इनको करवाते हैं. उनके बाद हम इनको प्ले थेरेपी करवाते हैं. एक चीज़ जो मैं स्प्रॉगलेट्स की बताऊंगी कि आज तक अल्लाह का एहसान है कि हमारे पास कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को मारा हो या बच्चों ने कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की हो. यस, जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं तो इनके बहुत बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं. और मेरी हमेशा पेरेंट्स से यही शिकायत होती है, जब पेरेंट्स कहते हैं कर क्या रहा है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कर क्या रहा है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि जो बिगड़ी हुई चीज़ें पहले उसको तो मैं संभाल लूँ. एजुकेशन तो सेकेंडरी चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ बिहेवियर. बिहेवियर कंट्रोल होगा तो एजुकेशन खुद ब खुद आ जाएगी. एंड बिलीव मी, आफ्टर बिहेवियर उनके अंदर जो चेंजेस आने शुरू होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं कि पेरेंट्स समटाइम्स खुद भी हैरान हो जाते हैं. अपने बच्चों को प्लीज़ अब्यूज़ मत करें, बिकॉज वी पेरेंट्स आर द वंस जो सबसे पहले अपने बच्चे को लेट डाउन करते हैं, उनको अब्यूज़ कर रहे होते हैं. हम लोग सबके सामने अपने बच्चों का मजाक उड़ाते हैं. प्लीज़ कंपेयर मत करें अपने बच्चे को, इवन अपने ही बच्चों को आपस में कंपेयर मत करें. I know this is a very tough job, very, very tough job, because I myself is a mother and I know what I still go through. But please, जिसने पैदा किया है आगे का वही जानता है. हम तो सिर्फ आज के बारे में जानते हैं. इस आज को अच्छा बनाने की कोशिश करें. हमारी इस 7 years की हिस्ट्री में अल्लाह का शुक्र है कि 4 बच्चों ने बोर्ड से मैट्रिक पास किया है.
5 یا 6 بچوں نے BCom کیا جس میں 4 لڑکیاں تھیں. 2 بچوں نے ہمارے پاس سے O لیولز کیا ہے ہمارے ہی اسی اسپروگلٹ سے انڈر دس بینر, اور اس میں ہم نے ان کو بورڈ میں ایک لمبی فائٹ کے بعد ساری فیسلٹیز دلوائیں جو ان کو ملنی چاہیے تھیں. ابھی ہمارے پاس 3-4 بچے ہیں جو اس وقت 9th کے لیے تیاری کر رہے ہیں. Now my question is why Sproglets? Why anybody would like to bring his or her child to Sproglets? بہت انسٹیٹیوٹس کھلے ہوئے ہیں اس شہر میں, پوری کنٹری میں بہت ساری NGOs ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں, بٹ آپ پلیز سب سے پہلے چیز جو دیکھیے وہ یہ دیکھیے کہ واٹ از بیسٹ فار یور چائلڈ, واٹ از سوٹیبل فار یور چائلڈ. آپ کے بچے کو کیا چاہیے. لائک ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ایوری اسپیشی نیڈس اے ہیبیٹیٹ, a habitat which has been developed, which has been made by Allah for them. اگر آپ ان بچوں کو آپ ایک مینٹلی ریٹارڈیڈ بچے کے ساتھ رکھتے ہیں, یا اگر ان بچوں کو آپ سیریبرل پیلسی کے ساتھ رکھتے ہیں, تو مینٹلی ریٹارڈیڈ یا سیریبرل پیلسی والے بچے جو ہیں they are manageable, they are not educable. آپ کا بچہ ایجوکیبل ہے, اس کو آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. These are the children who are very prone to parenting. جب آپ ان کو ایسے بچوں کے ساتھ رکھیں گے, وہ بچہ ان کو دیکھ کے تو کچھ نہیں سیکھ رہا, مگر یہ ان کو دیکھ کے پیرنٹنگ سیکھیں گے اور یہ انہی کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیں گے. ہمارا ایم کیا ہوتا ہے, there was a seminar which was conducted by Temple Grandin, اور اس سیمینار اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. اس سیمینار میں شاید میرا بھی اس میں اتفاق ہوا, تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ Tony Edward was also there, and they all are autistics, they all are Asperger's, they all are autistic, and they are the best psychiatrists and the best therapist ever in the world now. بہت بکس انہوں نے لکھی ہیں, ہم انہی کی کتابیں پڑھتے ہیں, انہی کی چیزوں سے ہم سیکھ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ we all are automobiles, ہم سب آٹوموبیلز ہیں. کوئی جیسے ایک بائک والا ہے کہیں سے بھی نکل جائے گا, رکشے والا ہے کہیں سے بھی نکل جائے گا, پلین ہے وہ ہوا میں ہی چلے گا, کشتی ہے وہ پانی میں ہی چلے گی. they are like trains, ٹرین ہیں 2 پٹریوں پہ ہی چلیں گی. آپ صرف ان کی جگہ صاف کرتے چلے جاؤ, راستہ بناتے چلے جاؤ, وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, وہ ساری زندگی ان پٹریوں پہ گزار دیں گے. This is autism.